Hello students. So today we are going to begin with a new topic, that is decimal representation of rational numbers. Decimal representation of rational numbers. Now what is the meaning of decimal representation? So here, if we use decimal fractions while dividing the numerator of a rational number by its denominator, we get the decimal representation of a rational number. What we have to do? While dividing numerator by denominator, what we have to do? We have to divide the numerator of a rational number by the denominator. While dividing, if we use decimal fraction means decimal numbers having decimal point. So when we use such decimal numbers while division of what? Numerator by denominator, we get the decimal representation. Example, 7 upon 4. This is a rational number. 7 upon 4 is a rational number. So for writing it into decimal form, for writing this rational number into decimal form, what we will do? We will do division. Division of what? Numerator divided by the denominator. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस रैशनल नंबर. सो 4 ones are 4, remainder is 3. 7 minus 4 is 3. Now last year only we have studied that after any whole number, even if there is no decimal point, but we can take 0.000. 0.0 means what? Nothing after the decimal point. पॉइंट के बाद ज़ीरो है मतलब कुछ भी नहीं है. फिर क्यों लेना है? जस्ट फॉर आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस. अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसकी ज़रूरत है तो हमको सिर्फ 7 का फॉर्म चेंज करना है और 7.0 लेना है. कितने ज़ीरो ले सकते हैं हम पॉइंट के बाद? जितनी हमें ज़रूरत है उतने हम ज़ीरोस ले सकते हैं. वी कैन टेक दैट मैनी ज़ीरोस. सो फर्स्ट टेक 1 0. So here remainder is 3. This 0 will come down. 3 0 30. So 4 7s are 28. 30 minus 28 is 2. This 0, second 0 will come down. 2 0 20. 4 5s are 20. Remainder is 0. Division is complete. Division is complete means what? If remainder is 0, then we say that the division is complete, and this is called the quotient of the division. This is called the quotient of the division. और अगर रिमाइंडर में लास्ट में 0 आता है इसका मतलब डिवीजन कंप्लीट हो गया है. सो the decimal form of 7 upon 4 is 1.75. How you will read this? 1.75. Now the second point is, if the process of division ends, अगर division complete होता है, then such decimal form of rational number is called terminating decimal form. Terminating decimal form किसको बोलते हैं? ये 1.75. क्यों बोलते हैं इसको टर्मिनेटिंग? क्योंकि ये आंसर जो है ये डिवीज़न कंप्लीट होने के बाद मिला है हमको, और डिवीज़न कंप्लीट होना मतलब रिमाइंडर इज़ 0. तो जब डिवीज़न का प्रोसेस एंड होता है और जो हमें आंसर मिलता है, ऐसे फॉर्म को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. टर्मिनेटिंग मीन्स व्हाट? जिसका एंड होता है, जो एंड होता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग. देन there is one more thing which is non-terminating recurring decimal form. This also we have studied last year. Non-terminating recurring decimal form. Terminating मतलब अगर डिवीजन एंड होता है तो उस फॉर्म को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या है देखते हैं. वन एग्जाम्पल वी हैव टेकन 7 upon 6. सो दिस इज अ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं? बाय डूइंग डिवीजन. बाय डूइंग डिवीजन. एंड विच नंबर?
numerator divided by denominator. Numerator divided by denominator. Now we will start. 6 ones are 6. Subtraction. 7 minus 6 is 1. Now we have to continue the division. So we will take here decimal point. यहाँ decimal point देने के बाद तुरंत क्वोशंट में भी decimal point दे देना है, अदरवाइज हम लोग भूल जाते हैं फिर. Now first take only 1 0. Okay, this 0 will come near 1. So here it is 10. So 6 ones are 6 again. 10 minus 6 is 4. Division complete हुआ नहीं. Take one more 0, bring it down. So number becomes 40. Now 6 6 are 36. Again 40 minus 36 is 4. Now again we can take one more 0. पहले से बहुत सारे 0 लेकर नहीं रखना है. You have to increase the number of 0 as per the requirement. Now this 0 will come down. Again we got 40. See, here also we got 40. Again we have got 40. So again we will take 6 6 36. Again we will get 40 minus 36 4. Again we can take a 0. Again we can bring it down. Here it will again become 40. Again we will take 6. Means what? ये process चलता ही रहेगा. Means what? Division कभी ख़त्म नहीं होगा. पेज भर जाएगा, ऐसे बहुत सारे पेजेस भर जाएंगे, फिर भी आपका डिवीजन ख़त्म नहीं होगा. सो हियर व्हाट वी विल डू, वी विल गिव 3 डॉट्स. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 3 डॉट्स? कि डिवीजन आगे चलता ही रहेगा. नाउ व्हाट इज़ द आंसर ऑफ 7/6? 1.166 dot dot dot. What is the meaning of dot? That division does not end, and the process which does not end is called non-terminating. जो end होता है उसको बोलते हैं terminating, जो end नहीं होता है उसको बोलते हैं non-terminating. Now what is the meaning of the word recurring? Now see here, डिवीजन तो एंड नहीं हो रहा है, इसके लिए हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग. और एक चीज़ हो रही है कि ये जो नंबर है 6, ये बार बार रिपीट हो रहा है. अब 6 6, अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे फिर से यहाँ 6 आएगा, फिर सॉल्व करेंगे फिर भी 6 आएगा. तो ये 6 नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, रिकर हो रहा है. रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग. सो इफ द डिवीजन डज नॉट एंड and if a number repeats, then such decimal form is called non-terminating and recurring. Non-terminating and recurring. तो इसको लिखने का दूसरा तरीका है 1.16 and give a dot above 6. What is the meaning of this dot above 6? That 6 is recurring. 6 के ऊपर डॉट दिया है, मतलब क्या है? 6 is recurring. Understood? Now one more example we will take of non-terminating and recurring. See here. Second example is 23/99. We have to convert it into decimal representation. So what is the rule? Do division. In division, always numerator will be here in the dividend and denominator will be your divisor. In this example, 99 is bigger number, so don't write it in the dividend. Okay, the rule is that numerator should be there in the dividend and denominator should be there in the divisor. फिर न्यूमरेटर छोटा रहा डिनोमिनेटर से तो भी चलेगा, पर डिवीजन हमको न्यूमरेटर का ही करना है. 23 should be written in the dividend. Now, as the dividend is smaller than the divisor, first we will take 0. 99 के टेबल में 23 नहीं आ सकता है, सो वो उससे छोटा है, सो पहला लेंगे हम 0. 0s are 0. Subtraction. 23 minus 0 we will get again 23. Now what we will do? We will take a decimal point. और डिविडेंड में जब डेसिमल पॉइंट लेंगे तुरंत हम क्वोशंट में भी डेसिमल पॉइंट लिख देंगे. नाउ हियर वी कैन टेक
0. This 0 will come down. So now we want 230. Now here I have written the table of 99. How to make the table of 99? This we have studied in 5th standard, that how to make the tables of big numbers. How to make 99 plus 99, 198. फिर ये आंसर में वापस प्लस 99, 297. फिर से प्लस 99, 396, प्लस 99, ऐसे प्लस 99, 99 करते जाना है. नाउ वी वांट 230. 230 is not there in the table of 99. So what we will do? We will select a number which is smaller than 230. Which is smaller than 230. So which number can you see smaller than 230? It is 198. So 99 2s are 198. Now subtraction. 0 minus 8 not possible. So we will do borrowing. So here it will become 10. 10 minus 8 is 2. 2 minus 9 again not possible. So again we will do borrowing. It will become 12. 12 minus 9 is 3. And here 1 minus 1 is 0. So subtraction answer is 32. 032 means what? 32. Now again we will take one more 0. It will come down. So now the required number is 320. Can you see 320 in the table? No. So which number we will take smaller than 320? Means we will take 99 3s are 297. Now again we will do subtraction. So 0 minus 7 not possible. So we will do borrowing. 10 minus 7 is 3. Again borrowing. 11 minus 9 is 2. Now again 0. So again we got 230. पहले भी 230 मिला था, अब भी 230 मिला है. फिर से लेना पड़ेगा 2s. फिर से आएगा यहाँ 198. फिर से सब्ट्रैक्शन करेंगे, आंसर आएगा 32. फिर 0 लेंगे, फिर से हो जाएगा 320. फिर से लेंगे 3s 297. फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 23. लाइक दिस वी कैन कंटिन्यू till our book ends, but the division will never end. So what we will do? We will give here dot dot dot, only 3 dots. So what is the answer? 0.2323 dot dot dot. Dot 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 means division does not end, and division does not end means it is called non-terminating. Non-terminating and recurring. Recurring means what? Repeating. क्या repeat हो रहा है? 2 3 2 3. और आगे सॉल्व करते तो हमें फिर से वही मिलता 2 3 2 3 2 3 2 3 and so on. So how we will write it? 0.23. और 2 3 दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम इसके ऊपर देंगे एक डैश. In the previous example only a single digit was repeating. So if single digit is repeating, then we will give a dot above it while writing final answer. And if 2 digits are repeating, then we will write a dash above the 2 digits or the group of the digits. कभी कभी हो सकता है कि 3 digits repeat होंगे, तो जो 3 digit repeat हो रहे हैं तीनों पे dash देना है. Like that you have to do while writing the final answer. So this decimal form is called as non-terminating recurring decimal form. Non-terminating recurring decimal form, and this is your terminating decimal form. Now this point is remaining. This we will take in the next lecture. Okay, thank you.